and His valuable gift that He has given us. So my request to all of you is you please be very honest. Don't just copy paste from somewhere else. What is your genuine feeling as a humble offering to Srila Prabhupada? We must offer. So who will begin? Who will take the opportunity first? Who speaks first gets the maximum time. Simple. Because time will pass by. Yesterday when I went there was an opportunity for other devotee to speak, but he was a little hesitant. So I got the opportunity, and I could, to some extent, get the privilege of time to be able to glorify Srila Prabhupada. But normally they don't give so much of time. Yesterday I got more than 15 minutes. So the same is applicable here also. Those who are feeling shy, that means they don't want to glorify. They have nothing in their heart. Okay, Sonika, go ahead. First up, use any language. Language of heart. Hindi, English, mix, whatever. Speak your heart. हरे कृष्ण प्रभु जी, गलत प्रणाम Thank प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद का अमेजिंग रोल है मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड है। जो मैं पहले हुआ करती थी अभी तो बिल्कुल नहीं, मीन्स अलग ही डिफरेंट लाइफ चल रहा है और वो बहुत ही ब्लिसफुल है। अभी जब कुछ टाइम के लिए जब मुझे बैंगलोर जाना पड़ा था, तब मुझे कुछ ज्यादा ही मतलब इम्पोर्टेंस पता चल रहा था डिवोटी एसोसिएशन का, जो कि श्रील प्रभुपाद के कारण हमें मिल रहा है। ये जो सिस्टम, ये जो इस्कॉन संस्था उन्होंने बनाई है और सारे डिवोटीज के लिए एक तरह से शेल्टर बना दिया है। उनके एब्सेंस में भी वो अपनी शेल्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए। तो इसके लिए तो मैं हमेशा ही ग्रेटफुल रहूंगी। मैं डेली प्रे भी करती हूँ उनसे कि हमेशा मुझे ये जो उनकी डिवोटीज का संग है मिलता रहे। प्रभुपाद की लाइफ से भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने को मिलती है और बहुत इंस्पायरिंग है। उनके तो हर एक मतलब उनकी लीलाएं या उनका जो भी पास टाइम है सारे ही इंस्पायरिंग है। बट कुछ कुछ मैं जो कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं वो शेयर करना चाहूंगी। एक बार जैसे जब उनका एंड टाइम था, मतलब प्रभुपाद बिल्कुल अपने मतलब इस धरा धाम को छोड़ के जाने वाले थे। तो उस टाइम पे उनकी हालत जो है ऐसी थी कि वो अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी भागवतम का रिसाइटेशन किए जा रहे थे। तो उस टाइम पे उनकी उनकी जो बॉडीली स्ट्रक्चर है उनको देख करके एक किसी डिवोटी ने ये कहा था कि प्रभुपाद की ऐसी स्थिति है, मुझसे देखी नहीं जा रही है, भगवान से मैं प्रे करूंगा कि मेरी मेरी जो आयु है, मेरा जो एज है वो प्रभुपाद को लग जाए और उनकी जगह ये मतलब जो भी है मुझे मिल जाए। तो श्रील प्रभुपाद को जब पता चला तो प्रभुपाद ने इस चीज से वो प्लीज नहीं हुए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये डिवोटी मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, बट प्रभुपाद ऐसा नहीं किए। प्रभुपाद इस चीज से प्लीज नहीं थे। उन्होंने सीधे कहा कि डोंट बी सेंटिमेंटल, डोंट बी इमोशनल। आप अगर सच में मेरे लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो तो जो मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करो। आप मेरे जो इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मोमेंट है उसको आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करो, देन आई विल बी प्लीज, एंड दैट इज द रियल ऑफरिंग टू मी। तो ये श्रील प्रभुपाद की जो इंस्ट्रक्शन था जो एंड टाइम में उन्होंने दिया था, उस चीज को मतलब मुझे स्पेशली हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हम प्रभुपाद के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं तो हमें प्रीचिंग और साधना पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। और साथ में एक जो पास टाइम है जो अक्सर बहुत सारे डिवोटीज शेयर करते हैं श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद जो है वो अपने गुरु महाराज और जो वैष्णव परंपरा है उनके प्रति बहुत ज्यादा मतलब ग्रेटिट्यूड का फीलिंग रखते थे और उनकी मर्सी के लिए हमेशा प्रे करते थे। तो इसका एक बहुत मतलब अच्छा एग्जाम्पल मतलब देखते हैं जब कि राधा दामोदर टेम्पल में थे और वहां के एक संत ने इस चीज को शेयर किया था कि श्रील प्रभुपाद वहां राधा दामोदर टेम्पल में रात रात में क्लीनिंग करते थे और रोते थे, वो बेग करते थे श्रील रूप गोस्वामी से, श्रील सनातन गोस्वामी से और सभी आचार्य से, अपने गुरु महाराज से भी, कि वो उनको मर्सी दें ताकि वो आगे कुछ कर सके। तो यहाँ पे मतलब ये चीज सीखने को मिलता है कि हम जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जो हमारे जो गुरु हैं या गुरु परंपरा में जितने आचार्य हैं उनकी मर्जी से ही कर पाते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए
कि हम कुछ भी कर रहे हैं, लाइक थोड़ा बहुत अगर टीचिंग भी हो गया बाय चांस, तो हम उस चीज का क्रेडिट अपने ऊपर ना लें। मतलब वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आचार्यों की कृपा से, उनकी मर्जी से ही हो रहा है। तो हमारा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो ये अभी तो हमारे ऊपर सबसे बड़ा मर्सी जो है कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का है, क्योंकि उन्हीं की मर्जी के कारण हम लोग जो भी कर पा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। और मैं तो कुछ कर नहीं पाती हूँ, मुझे तो बल्कि मैं बस लेने का काम कर रही हूँ फिलहाल, लेकिन मुझे देना चाहिए ये चीज। बट मेरे अंदर से हमेशा आता है, बट मैं एक्चुअली कर नहीं पाती हूँ प्रॉपर तरीके से। श्री प्रभुपाद हमेशा इस चीज के लिए इवन अपने डिवोटीज को थैंक्स भी बोलते थे वो, कि वो मतलब वो उनके गुरु महाराज की जो ऑर्डर्स थे, इंस्ट्रक्शंस थे, उसको फॉलो करने में, उनको उनका फुलफिल करने में हेल्प कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद अपने डिवोटीज को भी जो उनके डिसाइपल्स हैं उनको भी थैंक्स बोलते थे, जबकि वो उनके डिसाइपल हैं, फिर भी उनके प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड का भाव रखते थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, और उनके गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में हेल्प कर रहे हैं। और एक और चीज था कि श्रील प्रभुपाद जो है इतने इतने मतलब संपन्न परिवार से थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। मीन्स वो पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा था, उनकी मतलब अच्छे फैमिली से आते थे, उनके पास वेल्थ की भी कमी नहीं थी, उनके पास अच्छा बिजनेस था। लेकिन फिर भी जब उनका बिजनेस जब मंद पड़ गया था या सब कुछ खत्म हो रहा था, तो उस टाइम पे श्रील प्रभुपाद कृष्णा के प्रति जो है ग्रेटफुल थे। ऐसे कंडीशन में हम लोग भगवान को उल्टा कोसने लगते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करे, बट प्रभुपाद जो थे वो भगवान की मर्जी को समझ रहे थे, और वो थैंक्स मतलब थैंकफुल थे कृष्णा के प्रति कि उन्होंने सब कुछ लिया। इसका मतलब कि वो कृष्णा की अब मेरे ऊपर मर्जी हो रही है। और साथ में श्रील प्रभुपाद अपनी लाइफ टाइम में हमेशा जो उनके गुरु महाराज का की जो इच्छा थी, उसका जो इंस्ट्रक्शंस था, उसको एकदम लाइफ एंड सोल बना करके जीते थे। वो हमेशा इस चीज के लिए सोचते रहते थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा है पाश्चात्य देश में जाकर के प्रीचिंग करने के लिए, इंग्लिश कंट्रीज में जाकर के, तो मैं कैसे करूं। मतलब उस चीज के लिए वो सालों साल मेडिटेट करते रहे। और इवन जब मतलब जब जो है अपने ओल्ड एज में भी जाकर के उन्होंने इस चीज के लिए फेथ नहीं छोड़ा, उस चीज के लिए ट्राई करना नहीं छोड़ा, और अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को अल्टीमेटली फुलफिल किया। तो हमें भी अपनी जो शिक्षा गुरु हैं या दीक्षा गुरु हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए जो भी करना पड़े उसके लिए ट्राई करना चाहिए। ये मेरा अपना रियलाइजेशन है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। थैंक यू सोनिका, आपने एक्सप्रेस किया योर डिजायर दैट यू वांट टू फॉलो, वेरी गुड, एंड मेक फुल एफर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. If we have the desire, then Krishna will give us all the success. प्रभुपाद का एक परपोर्ट में शेयर करना चाहता हूँ. प्रभुपाद जी का एक बहुत ही विशेष परपोर्ट है. मनोराम प्रभु, यू हैव द लैपटॉप? यस प्रभु जी। शेयर इट इज इन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, चैप्टर 25, वर्स नंबर 278. हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं. सोनिका ने बताया कि कैसे प्रभुपाद जी ने पूरे लाइफ मेडिटेट किया भक्ति सिद्धांत महाराज की इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए. तो प्रभुपाद जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है हम सभी के लिए. देखिए क्या इंस्ट्रक्शन है. हाँ, नीचे आइए. लेट अस गो टू द ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट. सोनिका, आप पढ़ेंगे? यस प्रभु जी। पढ़िए. फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए मनोराम को. जी। हरे कृष्ण। Yeah. Men become strong and stout by eating sufficient grains, but the devotee who simply eat ordinary grains but does not taste the transcendental
क्या हुआ? The connection is lost. Yes, Prabhuji. It seems from our side it has been disconnected. Just wait for a moment. Maybe she'll come back. Read very important instruction. हरे कृष्णा प्रभु जी. Yeah, go. We are waiting for you. Okay, resume. दोबारा पढ़े. Men become strong and stout by eating sufficient grains, but the devotee who simply eat ordinary grains but does not taste the transcendental pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Krishna gradually become weak and falls down from the transcendental position. However, if one drinks but drop of nectar of Krishna's pastime, but a drop of nectar of Krishna's pastime, his body and mind begin to bloom, and he begins to laugh, sing, and dance. Read the purport. Prabhupada gives the very important instruction. And purport by his divine grace, all the devotees connected with the Krishna consciousness movement must read all the books that have been translated, the Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and others. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep, and fall down from their position. They will miss the opportunity to attain they will an miss. eternal blissful life. Thus, they will miss the opportunity to attain an eternal blissful life of the transcendental pleasure. This is the instruction. Prabhupada is saying all the devotees connected with the Krishna consciousness movement. So if you are feeling connected and if you want to remain connected, if you want to become Krishna conscious, what Prabhupada is saying, must read all the books that have been translated. Translated means this translation work is by His Divine Grace. And on the foremost of the books is Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and others. Otherwise, very big warning Srila Prabhupada is giving that after some time they will simply eat, sleep, and fall down from that position. Thus, they will miss the opportunity to attain the eternal blissful life of transcendental pleasure. This is what Krishna is saying: Moga Asha, Moga Karmana, Moga Jnana Vichetasam. Okay, you can close. So on Prabhupada's 128th appearance day, we should read, we should commit. What Prabhupada said, they will simply eat, sleep, and fall down. Cut your eating, cut your sleeping, but don't cut your hearing and reading. That will be an actual offering. Otherwise, it is a farce. It is just a pretense, it is a show. You are following Manoram? And my dear Pranav, what to say of Manoram and Pranav? Can any one of you say that you have out of 30 days, 15 days you read Prabhupada books at least for 1 hour? Anyone? एटलीस्ट इतना करो कि एक महीने में 10 से 15 घंटे पढ़ो. अगर नहीं पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने वार्निंग दिया है स्ट्रिक्ट. We will not be able to continue. Because Srila Prabhupada's books, his purports, have the vitality force to practice spirituality. Otherwise, one will not be able to practice. Okay. This is very important instruction. We are not told to build temples. We are not told to create centers. Are we told? No, we cannot do that. We struggle to convince even one person to practice Krishna consciousness. But what about this instruction? Does it depend on anything external? No, it depends only solely on our own discretion. So this instruction is very, very strong instruction of Srila Prabhupada, imbued with a strong caution and warning for all of us. That if we do not read,
Then if you do not hear, if you do not chant, the life, conditioned life has eating, sleeping, mating, and defending. What devotional life has? Uh, hearing, reading, chanting, and listening. So must commit. Best way of putting an offering is that we must nourish our intelligence and our heart with Srila Prabhupada's purport. And you will see, I mean, how much nectar is there. Prabhupada saying that transcendental pleasure is there in Prabhupada's purport. So taste that higher realm which is there, Srila Prabhupada's purport. Okay, next offering. Who will speak next? Everyone is silent. No one wants to speak. I am asking, apart from Sonika, for those who have not spoken, who will now want to glorify Srila Prabhupada? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए प्रियंका। हरे कृष्ण। तो ये श्रील प्रभुपाद जो हैं वो आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद वो नित्य सिद्ध आचार्य हैं। उन्होंने उन्होंने Get पूरी louder, विश्व please. को The microphone थोड़ा adjust कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Am I audible प्रभु जी? Yeah. Yes. श्रील प्रभुपाद आचार्य हैं प्रभु जी, हमारे प्रेमानंद आचार्य है इस्कॉन संस्था की, और उन्होंने पूरे विश्व को कृष्णा कॉन्शियसनेस दिया है। ही इज द आचार्य। वो पूरे जगत में, इस अर्थली प्लैनेट में जितने भी स्टेट्स है, कंट्रीज है, उन्होंने भगवान के शुद्ध प्रेम को ही दान दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश जो है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही उन्होंने प्रसारित किया। तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जब प्रीचिंग के थ्रू, प्रीचिंग जब मैं करती हूँ, दूसरे लोगों से मिलती हूँ, तो मुझमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहती थी। तो फिर मैंने जब डेली नहीं लेकिन कभी कभी श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ा करती हूँ, तो उसमें से एक चीज था, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो श्रील प्रभुपाद जी की एक चीज मुझे इंस्पायर की। तो जब उन्होंने 1935 कार्तिक का महीना चल रहा था, उस टाइम उन्होंने अपने गुरुदेव से राधा कुंड के पास मिले थे। तो तब भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब भी उनको धन मिलता है तो वो बुक्स छपवाने में यूटिलाइज करें। और इस तरह से, क्योंकि उनको इंग्लिश बड़ी अच्छी तरह से आती थी, तो उन गुरुदेव को पूरी तरह से उनके ऊपर पूर्ण विश्वास था कि इंग्लिश के माध्यम से ही वो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पाश्चात्य देश में वो पहुंचाएंगे और उनके जो बद्ध जीव होते हैं उनका उद्धार करेंगे। जैसे कि लोकचंद दास ठाकुर भी अपने चैतन्य मंगल में लिखते हैं कि यदि पापी छाड़ी धर्म दूरे देश से जाए तो मोर सेनापति भक्त याइबे तथाए। श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि कोई भी अगर सिंफुल पीपल, अगर वो छोड़ करके, अपने धर्म को छोड़ करके पाश्चात्य देश जाते हैं, जहाँ एनिमल की तरह लाइफ जीते हैं, तो उनके सेनापति भक्ति, जो कि श्रील प्रभुपाद ने अपने एक्टिविटीज से, पास्ट टाइम से प्रमाण किया है, बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस और चैंटिंग द सुप्रीम लॉर्ड की होली नेम, द नेम ऑफ द होली सुप्रीम लॉर्ड, तो इस तरह से वो उनको कृष्ण भावनामृत दिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1943 में बंगाल में अकाल पड़ गया था। तो उसके एक साल बाद, हाँ 43 में, और एक साल बाद प्रभुपाद जी ने पब्लिश किया था बैक टू गॉडहर्ड मैगजीन। तो उन्होंने वहां पे मेंशन किया था कि ये जो जगत है वो दुखालयम और अशाश्वतम है। कभी भी यहाँ पे कोई भी सुख से नहीं रह सकता, हैप्पीनेस कभी यहाँ पे आएगी ही नहीं। तो उस समय क्या होता था, युद्ध के दौरान हमेशा बम की बारिश हुआ करता था, कभी भी कहीं पे भी बम गिरे जाते थे।
तो अनेक लोग की मृत्यु हो गई थी और लोग चावल के लिए, खाने के लिए भी बहुत तरसते थे। तो इस चीज को बैक टू गॉडहेड में श्री प्रभुपाद ने मेंशन किया था कि उनको पूरी तरह से कन्विंस थे कि सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण ही सस्टेनर है। तो उनकी सृष्टि में कोई भी अभाव या गरीबी ऐसा कुछ नहीं है। मटेरियल नेचर को उन्होंने मतलब एक जीव को पोषण करने के लिए जो भी साधन की जरूरत होता है वो सब श्री कृष्ण ने दिया है। तो उन्होंने वहां पे मेंशन किया था कि ये जो समाज में जो लड़ाइयाँ का कारण है ये केवल ही केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस की कमी के वजह से ही हो रहा है। तो जब तक कोई भी कृष्ण के शरण में ना जाए, उनके लोटस फीट के शरण में ना जाए, तब तक इस संकट से कोई भी मतलब फ्री नहीं हो सकता, मुक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने उपदेश भी वहां पे दिए दिए थे कि लोगों को क्या करना है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस को अपनाते हुए भगवान से जुड़ने का उपदेश उन्होंने दिया था। और बिना कोई भेदभाव के उन्होंने हिप्पियों को भी उद्धार किया, जैसे कि कोई भी राष्ट्र से हो, कोई भी क्लास से हो और कोई भी धर्म से हो, और उनको पूरी प्योर डिवोटी से ट्रांसफॉर्म कराया उन्होंने। तो उनकी एक और क्वालिटी है ह्यूमिलिटीज की, कि उन्होंने हिप्पी सन्यास से होते हुए भी, सन्यासी होते हुए भी हिप्पियों के लिए खुद से गुलाब जामुन कुक करते थे और उनको प्रसाद खिलाते थे, फिर उनके झूठे बर्तन को भी साफ करते थे, क्योंकि वो फ्री थे। थ्री मोड ऑफ नेचर, मटेरियल नेचर से वो फ्री थे, जो कि हमारा फॉल्स ईगो इतना ज्यादा है कि कोई अगर हमसे कोई आर्गुमेंट भी कर दे ना, तो हमारा धैर्य वहीं पे ही नहीं रहता, हम टॉलरेट ही नहीं कर पाते। तो ही इज द पर्सनालिटी ऑफ टॉलरेंस ऑल्सो। यस प्रभु जी, क्योंकि इस बार जन्माष्टमी के टाइम मैंने कुछ प्रीच करने के लिए कोशिश किया। तो उन्होंने इस पृथ्वी में जो भी हो रहा है अभी, जैसे ये बांग्लादेश का काम हो गया, कांड जो हो गया, तो इस चीज के लिए ही इस्कॉन संस्था के बारे में ज्यादा कुछ बोलते हैं। तो मैं पहले पहले नर्वस हो जाती थी कि क्या बोलूं क्या नहीं। फिर श्रील प्रभुपाद ने ही रास्ता दिखाया कि किस तरह से उनको श्री कृष्ण की ओर जोड़ा जाए और उनको सही रेफरेंस के साथ बताया जाए कि ये मटेरियल वर्ल्ड में ये पहले भी होता था, अब भी होगा और आगे भी होने वाला है। Yes, Rohit. वेरी गुड। तो आप प्रभुपाद जी के प्रति जो आपके हृदय में कृतज्ञता है उसे आप कैसे पूरा करें? हाउ विल यू हाउ विल यू ट्राई टू रिपे द डेथ? श्रील प्रभुपाद जी ने जो भी कंपोज किया है, जो भी लिखे हैं, उनके बुक्स ज्यादातर के रेफरेंस के लिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और उनके पास टाइम ऑल्सो। तो इनमें से ही वो ताकत आती है, वो धैर्य आती है कि मैं किस तरह से इनका जवाब दे सकूं प्रीच करने के टाइम। इस वजह से मैं रीडिंग करूंगी हमेशा। कब से? रोज डेली तो नहीं कर पाती, पर तो कोशिश करूंगी डेली खाती हो कि या नहीं? डेली खाने में भी समय नहीं निकलता। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं साहब, यस मुझे। if one is not reading, he will simply eat, sleep and fall down. So if you want to prevent from fall down, we must read. Okay, make it a habit. At least read few pages every day. When it is very tired, at least read one page. But यस one page is bare जरूर। minimum. One page में not even 10 minutes लगेगा. इस रोज मैं हैबिट डालूंगी कि जो भी मैंने पैराग्राफ पढ़ा है फिर उसका मैं नोट्स बना कर रख लूं। हाँ, वो अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट पढ़िए। प्रभुपाद जी की पुस्तक खोलिए और जब हम परपोर्ट्स पढ़ेंगे तो प्रभुपाद से कनेक्ट हो, और जो आप करिए उस शक्ति का संचार हो, तो प्रचार भी होगा। जब शक्ति हृदय में है तो अवश्य ही वो दूसरे लोगों को आकर्षित प्रभावित करेगी। ठीक है प्रियंका, तो आप प्रभुपाद जी के लिए यही ऑफरिंग देंगे कि प्लीज गिव मी दी इंटेलिजेंस, प्लीज गिव मी दी स्ट्रेंथ टू बी एबल टू रीड एंड नरिश फ्रॉम योर पर्पस।
every day without fail. Yes, You must Prabhuji. speak sincerely to Prabhupada and his mercy will flow. Thank you, Priyanka. Hare Krishna. Pradeep, you speak. Unmute and speak this Hare time. Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Dhanyavad Prabhuji. Srila Prabhupada actually received profound blessing from his spiritual master, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and he achieved the love of Godhead Sri Krishna. So the supremacy of the Supreme Lord can be only known by his mercy through his transcendental literature, through his devotional service. Prabhupada established more than 10,000 temples all over the 1,000 temples all over the world, and by his mercy only, so unlimited devotees became devoted in the devotional service of the Supreme Lord, and still many centers are established due to his transcendental process. Now it is spreading from village to village, and as he is Jagat Guru, so he is each and every instruction is highly valuable and it should be followed. You are reading a report or what? No, Prabhu. What is the impact in your life? Your So only by Srila Prabhupada mercy only. Actually, I was not known before Krishna. I know generally as he is God, but by uh, association in Krishna consciousness, so I came to know that Krishna is the supreme. So by his transcendental literature, if we follow the instructions of Srila Prabhupada, then only we can came to know that Krishna is the supreme Lord. To attain, we can attain the supreme Lord through his mercy and his devotees. So so I praise Srila Prabhupada and that to follow his representatives without deviation from the devotional service. So, as it is challenging in this material world, every time there is problems, deviations. So I sincerely beg you, Srila Prabhupada, to be in this process of devotional service and attain this spiritual master love. for that, what will be your chesta? What will be the endeavor and the effort? For practice, so I have to follow the instructions of the spiritual master without deviation. Read one purport. What Srila Prabhupada's deep desire is. This is again from Chaitanya Charitamrita. Manoram Prabhu, this is 24, Madhya Leela 24, verse number 98. I'm just joining in a moment. You please open up Madhya Leela 24, chapter 98 verse.
Okay, come down to the translation and then the purport. Read Pradeep quickly. The intelligent who have understood the Supreme Lord in the association of pure devotees and have become free from bad materialistic association can never avoid hearing the glories of the Lord, even though they have heard them only once. Okay, come down. Right, a pure devotee. Read. A pure devotee becomes attached to Krishna by hearing the Lord's glories. The Lord's glories and the Lord Himself are identical. One has to be qualified to understand this absolute truth. Therefore, one should be given a chance to associate with a pure devotee. Our Krishna consciousness movement is meant for this purpose. We want to create pure devotees so that other people will benefit by their association. In this way, the number of pure This is the mission of Srila Prabhupada. Prabhupada says, we want to create pure devotees so that other people will benefit by their association. Okay, read ahead. In this way, the number of pure devotees increases. Professional preachers cannot create pure devotees. There are many professional preachers of Srimad Bhagavatam who read this book to earn their livelihood. However, they cannot convert materialistic people to devotional service. Only a pure devotee can convert others to pure devotional service. It is therefore important for all the preachers in our Krishna consciousness movement to first become pure devotees, follow the Okay. regulator. Yeah. So Priyanka, you hearing? This is what it means. Why we are not having success, we are not able to convince others because we are lacking here. Prabhupada is saying that it is therefore important that for all the preachers in our Krishna consciousness to first become pure. How to become pure devotee? Prabhupada gives the process. Go ahead. Read quickly, read, don't waste time. You don't want to read, Pradeep? Sorry, Guru. So it is therefore important for all the preachers in our Krishna consciousness movement to first become pure devotee and follow regulative principles, refraining from illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. They should regularly chant the Hare Krishna Mahamantra on their beads, follow the devotional process. Rise early in the morning, attend Mangal Harati, and recite Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita regularly. In this way, one can become purified and free from all material contamination. Okay, thank you. So this is the process which Srila Prabhupada has given, and whoever is purely following the process is by all means is becoming pure. And if one is becoming pure, he can convert others impure to become pure. And that is what preaching is. What is preaching? To make the impure become pure. That potency Prabhupada is empowering to all of his Krishna, those who are joining Krishna consciousness movement. Okay, next. Quickly, it is reaching 9. It's already 9. Turn up. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hey, Krishna. You are inside the room, na? Not in the lobby? Corridor. In the Srimad Bhagavatam, it is mentioned in 7th canto, Hiranyakashipu asked his son Prahlad Maharaj that how he remains so happy in spite of being so much torture is done by Hiranyakashipu.
So Prahlad Maharaj said that answered Nate Bidum Sarta Gatimi Vishnu. So only by devotional service we can remain, we can become happy and peaceful and blissful. Uh, Today morning in the lecture, I heard that Prabhupada said that Hiranya means gold and Kashipo means caution. So everyone is, all of us in this material world, trying to accumulate more and more material things, and so we are thinking that by that we become happy. But these things are not gives us happiness. So only devotional service. And that verse was 1 to 6. सबै 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 पुंसां परधर्म यतो भक्तिरदक्षजे अहितकी अप्रियता यात्मा सुप्रसिद्धति. So by devotional service only living entities can become ultimate get supreme happiness, unmotivated, uninterrupted devotional service only satisfy ourselves. So Srila Prabhupada already knows that this fact, so he is so very desperate to preach these things to all over the world. So he prayed to Lord, and we also heard that he was crying before Rupa Goswami that so that he can become so that they can guide him how to preach. And Srila Prabhupada is like Supreme Lord. He is all the qualities of Supreme Lord manifested in him. We know that Krishna has 64 qualities. So Srila Prabhupada also manifested all these qualities. So he's become like equal to God. So we worship him. No. Where did you read this? This is wrong philosophy. Bogus. He manifested partially, Prabhuji. Where did you read all this? Show me the evidence. Yashasti Bhaktir Bhagavati Apintana Sarva Yes, Guna. always says Guna, but they do not say that he becomes like God. By serving the Lord, he becomes so lovable that the Lord becomes his subservient. That is the process which our acharyas only. Yes, and we worship. Yeah, that survey, that samasate sura. What is the sura? Sura is the Lord, Supreme Lord. Then, what is sura? See the word meaning? Demigods. Then, Demigods. so how you are equating? So, Then it will be a second offense. Consider the demigods like Brahma and Shiva to be equal to the Supreme Lord. we also have these qualities in some partially, not fully. Also possess. Prabhupada always said that whoever says that he is God, that means he is in ignorance. Prabhupada never accepted that. There are some sects. There is this Swaminarayan. Swaminarayan never said that he is God. He said he is servant of God, but his followers made him God. Prabhupada never tolerated this. Okay, so this point is not proper. Yes, Prabhuji. So Srila Prabhupada become as Jagat Guru. He shows us this right path to connect with the Supreme Lord and become to guide our life in proper way and make our life successful. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Manoram Prabhu. हरे कृष्ण प्रभुजी नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशधारिणे. So as previously I used to hear from Bhagavad Gita also and could not connect that how Srila Prabhupada is an Acharya. And after we have read second time Bhagavad Gita and we have heard from you, Prabhuji, then it became clear where Lord Krishna in answer to Arjuna, he was telling
about the acharyas. And Srila Prabhupada, he has confirmed in this verse 6.42 that how the acharya, how one becomes acharya, and what are the criteria actually. So he told that acharya, they actually they appear in very learned and devoted families where they get trained, and they becomes gradually the trainers then, and they preach Krishna consciousness. And he clearly mentioned in this verse that Om Vishnupad Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj and our humble self had the opportunity to take birth in such families. So after reading these words, I was convinced that how we can relate Srila Prabhupada as an Acharya, just not by theoretically assuming, but this is a Shastric reference. So after having understood this concept, Acharya, then we can see, and I relate to my life also, after hearing specifically from Bhagavad Gita only, that how we can relate Srila Prabhupada's different expertise and qualities that impact our path of Krishna consciousness. So first of all, he is very much expert. We see expert in the sense that he never left anybody in the service of the Supreme Lord. So in whichever way he can engage, he engaged everybody. And as per my situation is concerned, so I was also not devoted, even though I heard previously, but not committed also. But it is Srila Prabhupada's expertise that he has presented in his Shastra, which actually gradually drew my attention. And then after hearing, gradually I could connect with him. We also see that a devotee's most important quality is humbleness. So most of the time it happens that even though I do not know maybe 2-3 verses also fully, but if I know something, it feels that I know many things. But Srila Prabhupada, he told in the introduction of Bhagavad Gita, and he expressed his humbleness that whatever explanations I have given, no of the credit goes for me. Everything is for towards to my Gurudev. And he told that if anything, any credit goes, it is simply because I just wanted to present it as it is. So this is what is the most important thing in his expressions, that he has presented the purest things, not the mixed bhakti or Mishra bhakti principles. That is why we have seen that so many persons in this age, modern age, they have got attracted towards Srila Prabhupada's philosophy, and they are getting connected, including myself. So I'll be coming how I got connected, but then I wanted to share few more points. How Srila Prabhupada is so much expert that he is drawing everyone's attention towards him. So also he has made this Krishna consciousness process easy. Although we have seen in Bhagavad Gita, in some of the purport, Prabhupada only mentioned that Krishna consciousness is not so easy. But Srila Prabhupada, he has made this process easy. Easy in the way that, like for me, if previously I could, if I suppose I want to follow the Ekadashis, and if I have been told that without eating anything you have to follow, for me it is very difficult. But Srila Prabhupada has made this that it is not required that you need not take the grains, but at least if you are not able to, you can take some fruits or milk or some items, but still you follow. So this is what is the easiness the Srila Prabhupada has made this Krishna consciousness process so that everyone can get connected and then they can practice. They cannot, they just not blame that this process is very much difficult to follow. And this is very much applicable for me, Prabhuji. I think this principle that he has given to us. And another most important aspect through which rather I got much more attracted towards Srila Prabhupada's literature, basically Bhagavad Gita, that he has presented it in a most scientific way. And the science we can relate everywhere in the
Bhagavad Gita, first when I read about the creation of this universe, so we are behind this Big Bang philosophy. But somewhere I used to get stuck that what before that, if something condensed and highly temperature suddenly get expanded and this universe came out. So I was confused. But when I read a verse, I think it was from second chapter only, so Prabhupada has given in detail how from Mahavishnu this expansion happens. And I was very much happy after reading these words, and at least I got so much attracted towards Srila Prabhupada's principle. Then he has given practical things that if we regulate our eating, it is very much easy to wake up. Otherwise, it is very difficult. And science also, medical science says the same thing. So, and again, he has given many examples in the purports that drew my attention, that he told how Krishna consciousness removes our anarthas from our heart. Like he has given the example of action of medicine. If we take the medicine, then gradually it starts acting and curing the disease, even though we do not understand how it is happening. So the same similar way, if we take this process of Krishna consciousness, it gradually cures our anarthas and we become gradually pure. Also, Prabhupada has spoke about an iron coming near to a fire and then it also becomes fire. So here Srila Prabhupada wanted to explain that by remaining in touch of Sadhu Sangha, we also can gradually develop taste for the Supreme Lord. So that means sadhus are like fire who are pure. So in touch of them, we can also gradually become pure. So this many examples are so much scientifically defined that I think in nowhere, no literatures it will be there. And I could feel that specifically from my parents' practice, although they are following the Gauriya Math, but once I have given them, I think Prabhuji, you only have given them this Bhagavad Gita of Srila Prabhupada and Bhagavatam. After reading them, every day they will read, every day evening they will read, and their feedback is that this is different. Srila Prabhupada's presentation is totally different. The way he has presented all the Shastric references. So that's so like me, it was never possible. I have just heard about Ramayana, Mahabharata, and those Puranas, but I never think it would have been possible for me to read all those Shastras and draw the conclusion. But the way Srila Prabhupada has presented every messages and meaning, I think it is very much important. And my day started when I came to IARI, even though I was running after IITs, but somehow I could not get there. And now I can realize that how Lord Krishna's spear is there everywhere, his umbrella, that he wanted to gift Srila Prabhupada and drawn back from the drowning effect. So that is what started actually hearing weekly Bhagavad Gita classes in IARI, and gradually that is what I think this is the practical part. That previously also I used to hear my parents also, they used to discuss, but I never give attention to Bhagavad Gita or maybe Srimad Bhagavatam, because the way Srila Prabhupada he has presented, the way we can connect, it is very much easy and practical. So I think that is how I got connected, and even though I am not firm in practice, but still this attraction is there towards Srila Prabhupada's literature. That, and one more thing, that even Prabhuji also told that if we read Srila Prabhupada's these literatures given in English, will become perfect and even in English also. So I think 80% of the words or sentences, I think if I would not have read Srila Prabhupada's literature, then I would not have known those words and vocabularies. So the way I think this is the expertise of Srila Prabhupada, the way he has he has brought everyone to this Krishna consciousness movement. And I now can really believe that this Chakshudan Dilochi Janme Janme Prabhu Shaya. Otherwise, I think it was not possible suddenly in this life
I got at the last moment Srila Gurudev, he accepted as a disciple. It was never possible, I think, if there was not any mercy from Srila Prabhupada coming down from Lord Krishna. I think this is what is the most valuable gift that Srila Prabhupada has given, and specifically to all from our IARI devotee circle, those who are attending also these classes every evening. So I think this is most important thing. Srila Prabhupada has given this sadhu sangha, even though we are far away, but we are remaining connected. So Mahaprabhu's all the instructions, all the Acharya's instructions, Srila Prabhupada has incorporated in such a way that wherever, in whatever condition we are there, still we can access the literature and we can practice. But the most weakable, I think, weak point for me is that I am not strong in preaching, and also reading part. I have to give attention, Prabhuji. I think so. At least I can commit that before the class happens, everyday class happens, at least half an hour. I will put my best so that at least half an hour before the class I can go through. That will And be impossible because you struggle to join in time. Wake up early, half an hour, and read. yes, Prabhuji. For that, you have to have discipline to sleep in time. Yes. Then it will happen, otherwise it will not happen. Okay. Thank you, Manoram Prabhu. This is what you really prepared. If we can see the glory of the Acharya, his contribution, then we will see how we will feel from our heart, inspired and enthused to follow what is the guideline, what is the instruction of the Acharya. Okay, those who have not spoken today may kindly continue tomorrow. Shri Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Hare Krishna.